खुद को सुधार रहा है। आईआईटी भुवनेश्वर का REP युवा एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह उनके संभावित विचारों को टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग और लीगल रूप से हर संभव सहायता प्रदान करता है, जो ग्रास रूट लेवल पर राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। इसके अलावा 450 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे चरण में कैंपस के बहुमुखी विकास की भी योजना बनाई गई है, जिसके तहत अत्याधुनिक शोध उपकरणों की प्रोक्योरमेंट की जाएगी। साथ ही मौजूदा कैंपस का नवीनीकरण, छात्रावासों का विस्तार, मोबिलिटी कॉरिडोर्स में वृद्धि और ग्रीन कैंपस व्यू का निर्माण शामिल है। अभी टाइम आया है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाना है, हमें सोशियो इकोनॉमिक चेंज की कैटलिस्ट बनना है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें वेल्थ क्रिएटर बनना है। हमारी सौभाग्य है, हम सब ऐसे एक समय में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की इस स्टेज पे हम पहुंचे हैं। परसिवियरेंस, क्रिएटिविटी एंड इम्पैक्ट की अपनी कहानियों के साथ स्टार्टअप को सफलता में बदलने के लिए इंस्टीट्यूशन मार्ग के लिए सलाहकारों या विशेषज्ञों का एक नेटवर्क बना रहा है। आईआईटी भुवनेश्वर राज्य भर के सभी इनोवेटर्स और विजनरीज जो अपनी आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलते देखना चाहते हैं, उन्हें आमंत्रित करता है संस्थान के रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में, जिसका उद्घाटन आज माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कर कमलों से होने जा रहा है। हमारे लिए आज वो शक्ति बनने का समय है जो हमारे राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाता है। आइए हम सब मिलकर अपना भारत विकसित भारत बनाएं। We will now have the laying of the foundation of infrastructure project. This will be done in a virtual mode. I request our Union Minister, Shri Dharmendra Pradhan, to please do the honors. अतिथि देवो भवः के विचार को साझा करते हुए और इस भव्य समारोह को आगे बढ़ाते हुए हमारे व्यक्तित्व के धनी अतिथियों को सुनने का वक्त आ गया है। हमारे पहले स्पीकर हैं श्रीमान TV नारेंद्रन जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। आप टाटा स्टील एवं लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक हैं। खनन और धातु उद्योग में आपको 35 वर्षों का अनुभव है। आपने प्रख्यात संस्थानों जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं IIM कैलकाटा से शिक्षा प्राप्त की है। आपको विशिष्ट छात्र पुरस्कार इन दोनों संस्थानों से प्राप्त हुआ है। आप वर्तमान में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। थैंक यू। Honorable Minister Shri Dharmendra Pradhan, Mr. Sanjay Murthy, Mr. Sanjay Kumar, Mr. R.P. Singh, Chairman of the Board of Governors, Mr. Shripad Karmalkar, the Director of IIT Bhubaneswar, all the other distinguished guests who are on stage, off stage, members of the media, ladies and gentlemen. Firstly, thank you very much for inviting me here today in this beautiful auditorium for a wonderful event. And congratulations to everyone in IIT Bhubaneswar for organizing this event. This event addresses many issues which are very important for the future of the country. First and foremost is the startup ecosystem. I think for a country of our size, with the demographics that we have, with millions of people joining the workforce or looking for jobs every year, I think it's very important to have job creators and not just job seekers. And I think startups do that, and they've done that wonderfully well over the last few years. There's a lot of capital in global markets looking for investment opportunities in India. And I think startups are a great way for us to leverage the potential that we have in the country, the ideation that is available with the youth, and the infrastructure that is provided by the government to create champions for the future. So I think it's wonderful from that point of view.
It's also important for us as a country to have more and more innovation, more and more technology. And for that, the academic institutions, the industrial companies, the startups, research and institutions and the government laboratories, the CSIR labs, etc., need to work together. And I think successful, innovative countries have this ecosystem all coming together. And I think these platforms that we are creating today help make that happen. As Tata Steel, it's a privilege to have been in Odisha even before the state of Odisha was formed. We've been here for more than 100 years. Today we are already producing 9 million tons of steel in Odisha in 3 locations. We are going to make it 14 million tons by next year, and we will continue to grow in Odisha. We also have a significant presence in mining in Odisha and in many other upstream and downstream industries. Our association with IIT Bhubaneswar goes back a few years. We've already done some work on batteries, for instance, using needle coke to make anode bars and also to use some manganese to make the cathode bars. We signed an MOU this morning to further cement our collaboration with IIT Bhubaneswar. And I'm also happy to say that Tata Steel is very happy to be an anchor partner for IIT Bhubaneswar. We will work together. There's so much to do. Odisha is emerging as a steel producing hub in the country. Steel is a very important part of not only the building the economy, but it's also a very important part of the transition that we need to make into a greener future. So I think there's a lot of research work that we need to do in making green steel, changing the processes that we use to produce steel, and also the opportunities that digitization of these processes bring to us. So I see a lot of opportunities for Tata Steel and IIT Bhubaneswar to work together, and I'm really happy to take forward these discussions beyond today's session. So thank you very much once again for inviting me. Thank you. Privileged to introduce our next speaker, Dr. Vivek Lal, Chief Executive of General Atomics Global Corporation. Dr. Lal earned his bachelor's degree in mechanical engineering from Carleton University, Canada, and master's degree in aeronautical engineering from Embry-Riddle Aeronautical University, Florida. He has a PhD in aerospace engineering from Wichita State University, Kansas. He formerly worked with NASA, Raytheon, Boeing, and Lockheed Martin. I request him to grace us with our words. Thank you. It's an honor and pleasure to be addressing all of you, and my first and foremost thanks to the visionary who we have on the dais, the Honorable Minister Dharmendra Pradhanji, who has enabled us all to be here. I think, as was mentioned, there are several countries represented here. Of course, all the student faculty of IIT Bhubaneswar and the startup community and the investor community. Getting folks from all these facets and stakeholder communities all together for such a auspicious occasion is no small feat, and it's very commendable that the Honorable Minister has been able to garner this audience today. I think under the stellar leadership of Prime Minister Modi, Resurgent India has set new standards in various sectors, including aerospace. And that's the field that I've grown up in, and I see a huge potential for India. As we were walking through the various startup exhibits, we noticed some in the drone community, some in artificial intelligence. There is quantum computing. There's many other such areas that I think many of you in this room will be looking to bring into the country and incubate a very huge ecosystem that I think the world would admire. It is heartening to notice that self-reliance is being applied across all sectors of industrial activity, and the need to expand India's scientific and technological capabilities are being translated into action through a national thought process. India's foremost research and development institutions, like IIT Bhubaneswar, have significantly invested in indigenous capabilities to bolster cutting-edge, high technology and advanced sciences. So this continued investment in R&D, this continued passion for Startup India is very commendable. We at General Atomics are working with 2 such startup companies, one in artificial intelligence as well as in semiconductors. However, the canvas is very big.
And I want to congratulate each and one of you for all the great work you're doing. Thank you. धन्यवाद श्रीमान। हमारे अगले वक्ता श्री आशीष कुमार चौहान जी हैं। आप एमडी और सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। आपने मॉडर्न फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। इससे पूर्व आप रिलायंस ग्रुप, मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम एवं बीएसई में भी कार्यरत थे। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे समक्ष अपने विचार। और ऐसा सरकार फ्री देला हम आंध्र तो पानी आनी न थांत सा तांका जदी सब सुविधा कर जंदी बोल जाय मिसिबो हम कोन हैला आवास घर नै कि कोन नै चावल दउचंती 6 मास को थरे आंध्रा रे अधिक देउचंती सर ओडिसा रे 6 मास 5 मास 4 मास को थरे देउचंती आंध्र को नियमित दउची हां नियमित देउची केवल ये गोटे गाँ नुहे ओडिशा आंध्र सीमांतर 100 रु अधिक गाँ उपर आंध्र नजर रही। आज सरकार अवहेला जो आज आंध्र ललुप दृष्टि दे ओडिशा को पसी आछंती बिजु पक्का घरे चलीची आंध्र पोस्ट ऑफिस निश्चित हम पई गोटे गर्व आपन में गर्व आज आमे देखिछु हमर विधायक हां एते दिन कोड दे सही दिला सर बस रे कंडक्टर पाइथिली सर मोर हे जाय ड्यूटी मिलुनी सर माने पोशाक पाइजन कि ड्यूटी नाही सर आपण हां ठीक अरे ठीक अछि 26 वर्ष कर्मी मुई किंतु ये जेकी नेता मन छंती मोर कथा के पदे सुनी ना आंध्र ओडिशा सीमा अंडर गुडारू देखंतु महापंचायत संकट रे भाषा संकट रे सीमा रविवार राति 8टा रे। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं। आज पर्यंत हमको किछि करि नाहंती रास्ता घाट नहीं करेक्ट नहीं आज पर्यंत टीबल नहीं आज मु आसिक पहुंची जाइछि केन्दुझर जिला खसीपुरा ब्लॉक अंतर्गत खालिया मेंटा पंचायत नागा डाही गाँव ज्वर होइतला आगे टिके ज्वर होइतला तापर से सागे सीरियस ज्वर हैला हमको एम्बुलेंस फोन करला से कहला हम इना रात रे जिमु नै आ तो भी सेमती तो भड़ा तो हम तो गरीब लोक पैसा भी थिबो नै आ कोन करबा मुंड ऊपर पक्का घर बन्या बात्या को नाही डर एमती अनेक स्लोगान अछि ए माँ आखिर कोह ही कहि दोछि कि ए गाँ को विकास केते पहुंची। एथर जन ऑडिट केन्दुझर जिला घसीपुरा ब्लॉक अंतर्गत खालिया मेंटा पंचायत नागाडाही ग्राम 11 फेब्रुआरी रविवार संध्या 7:30 रे महिलांक ठारे अधिक देखा जाउछि सर्वाइकल कैंसर काहेकि बढ़ुछि सर्वाइकल कैंसर रोगींक संख्या। सर्वाइकल कैंसर बा जरायु कर्कट कौन? सर्वाइकल कैंसर को केमिति चिन्हिबे? सर्वाइकल कैंसर रो कारण और लक्षण, चिकित्सा परे गर्भधारण संभव कि? केमिति करा जाए सर्वाइकल कैंसर रो चिकित्सा? सर्वाइकल कैंसर को रोकिबे किपरि? एथर प्रेस्क्रिप्शन रे सर्वाइकल कैंसर केते मारात्मक परामर्श देबे एसोसिएट कंसल्टेंट मेडिकल एंकोलॉजिस्ट डाक्टर रोमिला तिवारी। एथर प्रेस्क्रिप्शन टिप्स रे गैस्ट्रिक समस्यार समाधान जानतु वरिष्ठ पेट और यकृत रोग विशेषज्ञ डाक्तर शक्ति प्रसाद चौधरी ठारू। देखंतु प्रेस्क्रिप्शन एई रविवार अपराह्न 3:30 रे। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं। सांस्कृतिक राजधानी राज्य राजधानी कटक भुवनेश्वर प्रथम आप दृश्य देखा चाहिए क्राइम, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, बिजनेस, जीवन जीविका और संघर्षर आखि देखा कहानी
सिटी बड़ खबर प्रतिदिन संध्या 5:30 केवल अर्गस न्यूज रे। आमो परता खबर रे प्रथम आमे दो साधारण जनता मौलिक समस्या को गुरुत्व तर्क वितर्क विश्लेषण निर्भीक सांबादिकता आम संकल्प अर्गस न्यूज टीआरपी रो दौड़े नुह सत्यर संधान रे लोकों साथी रे अर्गस। मेकअप गेटअप प्रेजेंटेशन एक्शन रिएक्शन सेलिब्रेशन रूपेली परतारू रंगमंच केवल मनोरंजन ही आमर टार्गेट एंटरटेनमेंट 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 रविवार सकाल 9:30 और राति 9:30 रे। भारी फुले से गिर रही नानी मोड़ मोड़ी अम्मा गोरी नानी गोरी नानी अम्मा गोरी नानी अम्मा गोरी नानी अम्मा गोरी नानी। चलो देवमाली चलो राज्य आमर भोट आमर सरकार आमर आम विकास भी हेबो आम कथार। Last 12 years since exchanges NSE and BSE started SME and Startup Exchange. NSE's stock exchange is called emerged for that. Both exchanges put together have raised 16,000 crore for 900 companies. And their market capitalization today has become 256 lakh crore rupees. You have a chance now to raise funds for your ventures and also become wealthy yourself and create wealth for your country as well as create job. So come, become entrepreneurs, raise funds, become wealthy and make everyone else wealthy. Thank you very much. Our next speaker is Dr. Taito Grono, Minister and Deputy Head of Mission, Embassy of Finland. Dr. Grono majored in Management and Economical Politology. He has a Master's in Economics from Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki, and a PhD in Environmental Economics from University of Jyväskylä. We're happy to have you here, sir. Thank you. Honorable Minister, distinguished guests, dear faculty and students, as a former university lecturer and researcher, it's always a pleasure to return to the academia. Today is an important day. It marks a significant moment as we gather here for the inauguration of the 100 Cube Startup Initiative at the IIT Bhubaneswar Research and Entrepreneurship Park. This event underscores the collective commitment of fostering innovation and entrepreneurship. Finland's innovation community thrives in various sectors, including mobile technology, artificial intelligence, biotechnology, particularly quantum technology, climate research. Our strong research units in international law, economics, design, and social sciences as well contribute significantly to our innovation ecosystem. Finland's robust research basis has positioned it as a vibrant environment for startups. In fact, already 5 years ago, Finland accounted for approximately 10% of global startups exists, a testament to our thriving innovation landscape, and it's growing. Finland remains steadfast in increasing investments in research, providing a solid foundation for global science and technology partnership
collaborations. We are eager to strengthen our long-standing partnerships also with India and, Odisha, a dynamic economic powerhouse undergoing rapid development and digital transformation, of which India's upward trajectory in the global innovation ranking during the recent years reflects. Already, our two nations have cultivated fruitful partnerships. Initiatives like FICOR, DESI, and FINERAC, supported by key stakeholders in both countries, aim to deepen collaboration between our nations in diverse sectors of science and technology. The ongoing cooperation between Finland and India is recognized and valued at the national level, with notable events like the virtual summit between our prime ministers in 2021 serving as concrete examples of our commitment to collaboration. Together, let us seize this moment to advance innovation, foster collaboration, and pave the way for a future of shared success. Thank you. थैंक यू सर। हमारे अगले वक्ता डॉक्टर चिंतन वैष्णव, मिशन डायरेक्टर, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग। आप एक सोशियो टेक्नोलॉजिस्ट हैं। आप वर्तमान में अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक हैं। आप वर्तमान कार्यभार को संभालने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अवकाश पर आए हुए हैं। अपने समय का सदुपयोग करते हुए इन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा एवं अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। शुक्रिया। चलो देवमाली चलो राज्य आमर, भोट आमर, सरकार आमर, आम विकास भी हेबो आम कथारे। चोरी चपाटी पिसीर आमे करिबु विरोध। आपण करिबे निष्पत्ति महापंचायत रविवार राति 8टारे। मु पहुंचे दुर्गम अपंतरा ओडिशा रे। सुने आपणक मुहरु विकास को नहीं सतमिछर अंगे निभा कथा। मोर लुह और क्रोध को चापी रखे। देशर अमृत काल रे एठी विष और विषादर कहानी। वास्तवतार निछक सतकु नहीं मु आसुछि जन ऑडिट रे रविवार संध्या 7:30 रे। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं। जीवनर प्रतिटी जटिलता को सहज करिबार एक पवित्र माध्यम हेउछि गीता। सात्विक विचार संग को प्रेम, प्रसन्नता और शांति को धारण करिबा पई देखंतु मो सह गीतार सारमर्म, गीतार कथा प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार सकाळ 6:30 रे केवल अर्गस न्यूज रे। मनरे 42 मंच प्रश्नकाल सोमवार रु शुक्रवार संध्या 6:30। लोक कल्याण पई गणतंत्र और सरकार। माळ माळ योजना योजनार लाभ मिलुची तो सर्वसाधारण को केउ योजनार स्थिति कौन? पास, फेल, एवरेज ना एक्सीलेंट? आपण करिवे आकलन। देखंतु लोकपाल
रविवार राति 10:30 रे। सेमाने भिड़ा भितरे मुह तैयारी करिसंती निज पाई नियारा परिचय। तांको प्रतिभा समाज को करे प्रभावित। आमर प्रतिटी सकाळ से मानक सह जहाँ आपण मानकु प्रेरणा देव। आजिर अतिथि देखंतु सोमवार रु गुरुवार सकाळ 8:30 रे। ओडिशा सरकार फ्री देला हम आंध्र टू पानी आनी न थांत सर तांका जदी सब सुविधा कर जंदी बोल जाय मिसिबु हम कोन हैला आवास घर ना कि कोन ना चावल दउचंती 6 मास को थरे आंध्रा रे अधिका देउचंती सर ओडिशा रे 6 मास 5 मास 4 मास को थरे देउचंती। आंध्र को नियमित दउची? हां नियमित दउची। केवल ये गोटे गाँ नुहे ओडिशा आंध्र सीमांतर 100 रु अधिक गाँ उपर आंध्र नजर रही। आज सरकार अवहेला जो आज आंध्र ललुप दृष्टि दे ओडिशा को पसी आछंती। बिजु मुकाबला ज़्यादातर कोई नहीं कर सकता। सो आई थिंक if we focus on quality in these areas, then I think we'll produce something that's unique for the world. But overall, I really feel from having heard this last night, ये 100 cube का idea, I think it's very doable with the potential of this place. And needless to say, Atal Innovation Mission is with you in this journey. Thank you very much. Thank you, sir. Our next speaker is Madhumita Agrawal, an alumnus of IIT Kharagpur and IIM Bangalore. She's a serial entrepreneur and co-founder and CEO of Oben Electric, an electric motorcycle startup based in Bengaluru, Karnataka. Since its incorporation in 2020, the company has successfully raised over 120 crores. It has designed and developed a high-performance electric motorcycle completely made in India. We would love to hear from you, ma'am. Thank you. So I think a very good afternoon to all, and the brightest mind, I'm addressing some of the brightest mind. First of all, thank you for giving this opportunity to share whatever experience, whatever less experience I have, to share with the future of our country, the brightest mind. I'm honored to share the dais with some of the dignitaries and honorable minister. That's a great pleasure for me and an honor. So I think I would start when we say startups. You know, startups comes with a lot of courage. So as first thing I would say, you are having a great privilege, you know, all the students here, the startups here, who have that opportunity to kind of leverage this kind of a platform. First of all, you have a great platform, great privilege. And for startups, there are certain things. First, this currently in India, the era is of design. And I strongly believe that, and I think many of you will concurrent on that. We have been manufacturing since ages, but this is the time when we design. Design in India for global, no more jugaad. So I request, I insist, I even profess that no more jugaad, we build for the world. So thank you. So this is the era of design in India for the global. So as a startup, as a founder, when you decide, first thing you need a courage, right? And you have all it, right? Because you're sitting here means you have taken the first step. Second is problem. You need to solve a problem. It shouldn't be a temporary problem. It shouldn't be a very local problem. It has to be a problem which is at masses and which is not temporary. And you should have a unique solution to it, which is very important. Anything which has worked in US doesn't mean that it will work in India. So please get to the ground. Get to the ground and try to solve the problem. And last, but it is very important, the road to profitability, which I think very much is being talked now, that what is the road to making money, making a sustainable business, right? So when you are starting your journey now, these are very important points to be kept in mind. And a little bit of gyan on, innovation is very important.
But I would say innovation at the cost of business is brutal. So that is where I would like to address the second, stakeholders, those who are in this room, the education institution, our government, and other organizations. I think we have to kind of give that platform, which already the initiative has started, because hardware startups or hardware ideas are hard. It takes time, it takes money, there is a gestation period. So we need that kind of conducive environment. First of all, we need awareness. I think there are a lot of government policies, support, but somewhere we as startup don't know because we are busy building something. So we need awareness, we need that support. And we need, this is a request to the government, that we need much, much simpler processes, more efficient, gatekeepers at the other side, because we, as startups, we have very less bandwidth, right? We are busy solving something. So that is a support I would request on behalf of all the startups, that we need easy processes. We need a lot of awareness about so much of support that government is giving. And educational institutions, I think in the morning also we had a conversation that, the professors, the R&Ds, the PhDs have to now think that beyond just R&D projects, a sustainable business. Is this R&D solving a problem? Is this a sustainable or enough big problem it is that it has a market? So I think we have to just step up, because we have been doing that, but somewhere we are lacking that design. That is where I think I took, the courage twice. My first business was into R&D services. And everyone thought, what is, this lady doing? And then I built it up, and I could build that very well successfully. And then got into more crazy idea of getting into automotive, which is like world's second complex business. और करने से होता है. So guys, if you try, if you do, it happens. And there is ample opportunity, and you sitting in IIT, you can't say you don't have opportunity. We all have that brilliant platform where we can, reach out to the entire community and reach out for help. So I would leave with that thought. Right now, it is the era of design in India, made in India, for the global. So thank you so much. धन्यवाद महोदया। अब मैं सभा को संबोधित करने के लिए हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर आरपी सिंह को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आप जम्मू और कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व आप पावर ग्रिड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। वह बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रतिष्ठित संस्थानों के जैसे कि IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी एवं NIT पटना। आपका राष्ट्रीय पावर ट्रांसमिशन ग्रिड की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं थोड़ा हट के बोलूँगा, एज का भी सवाल है। मैंने ग्रेजुएशन किया 1969 में, तो थोड़ी सी शिक्षक टाइप वाली बात है और रियलिटी से दूर नहीं है। आज थोड़े हम रियलिटी से कहीं कहीं डाइग्रेस कर जाते हैं। मैं शुरू करता हूँ अपना वक्तव्य। हमारे मंत्री जी हमारे उड़ीसा के हैं, फंक्शन हम यहाँ करें तो हमारे हुए, वैसे तो आप हिंदुस्तान के मंत्री हैं एजुकेशन के। हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट एवं इंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर, डायस पर और ऑडिटोरियम में बैठे सम्मानीय अतिथिगण, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फैमिली मेंबर्स ऑफ IIT भुवनेश्वर, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम IIT के प्रांगण में इग्नाइटिंग इनोवेशन थीम पर आयोजित 100 क्यूब स्टार्टअप इनिशिएटिव के शुभारंभ के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश के विकास में रिसर्च और इनोवेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीते दशक में भारत एक वैश्विक
अनुसंधान एवं विकास के हब के रूप में तेजी से उभरा है। मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि इस दिशा में जल्द ही हमारा IIT भुवनेश्वर की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ेगी। ओडिशा सरकार फ्री देला आमे आंध्र टू पानी आनी न थांत सर तांका जदी सब सुविधा कर जंदी जाई मिसिबो आमे कोन हैला आवास घर नै कि कोन नै चावल दउचंती 6 मास को थरे आंध्रा रे अधिक देउछन सर ओडिसा रे 6 मास 5 मास 4 मास को थरे देउछन आंध्र को नियमित दउची हां नियमित दउची केवल ये गोटे गाँ नुहे ओडिशा आंध्र सीमांतर 100 रु अधिक गाँ उपर आंध्र नजर रही। आज सरकार अवहेला जो आज आंध्र ललुप दृष्टि दे ओडिशा को पसी आछंती बिजु पक्का घरे चलीची आंध्र पोस्ट ऑफिस निश्चित हम पई गोटे गर्व आपण में गर्व आज आमे देखिछु हमर विधायक हां एते दिन कोड दे सही दिला सर बस रे कंडक्टर पाइथिली सर मोर हे जाय ड्यूटी मिलुनी सर माने पोशाक पाइजन कि ड्यूटी नाही सर हां ठीक अरे ठीक अछि 26 वर्ष कर्मी मुई किंतु ये जेतकी नेता मन छंती मोर कथा के पदे सुनी ना आंध्र ओडिशा सीमा अंडर गुडारू देखंतु महापंचायत संकट रे भाषा संकट रे सीमा रविवार राति 8टा रे। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं। आज पर्यंत आमको किसी करी नाहंती रास्ता घाट नहीं करेक्ट नहीं आज पर्यंत टीबल नहीं आज मु आसिक पहुंची जाइछि केन्दुझर जिला खसीपुरा ब्लॉक अंतर्गत खालिया मेंटा पंचायत नागा डाही गाँव ज्वर होता आगे टे ज्वर होता सी सागे सीरीयस ज्वर है आमको आम्बुलांस फोन करला सी कहला मुझे राति जीमु नहीं ऑटो भी सेमती तो भड़ा तो आम तो गरीब लोक पैसा भी थी ना आ कौन करवा मुंड उपरे पक्का घर बन्या बात्या को नाही डर एमती अनेक स्लोगान अच्छी ए माँ आखिर कोह ही कही दउची कि ए गाँ को विकास केते पहुंची। एथर जन ऑडिट केन्दुझर जिला घसीपुरा ब्लॉक अंतर्गत खालिया मेंटा पंचायत नागाडाही ग्राम 11 फेब्रुआरी रविवार संध्या 7:30 रे महिलांक ठारे अधिक देखा जाउछि सर्वाइकल कैंसर काहेकि बढ़ुछि सर्वाइकल कैंसर रोगींक संख्या सर्वाइकल कैंसर बा जरायु कर्कट कौन सर्वाइकल कैंसर को केमिति चिन्हिबे सर्वाइकल कैंसर रो कारण और लक्षण चिकित्सा पर गर्भधारण संभव कि केमिति करा जाए सर्वाइकल कैंसर रो चिकित्सा सर्वाइकल कैंसर को रोकिबे किपरि एथर प्रेस्क्रिप्शन रे सर्वाइकल कैंसर केते मारात्मक परामर्श देबे एसोसिएट कंसल्टेंट मेडिकल एंकोलॉजिस्ट डाक्टर रोमिला तिवारी एथर प्रेस्क्रिप्शन टिप्स रे गैस्ट्रिक समस्यार समाधान जानतु वरिष्ठ पेट और यकृत रोग विशेषज्ञ डाक्तर शक्ति प्रसाद चौधरी देखंतु प्रेस्क्रिप्शन एई रविवार अपराह्न 3:30 रे। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं। सांस्कृतिक राजधानी राज्य राजधानी Please give them a round of applause. Next we have Mr. S.R. Narasimhan, Chairman and Managing Director of Grid Controller of India.
Up next is Mr. Pradeep Kumar Das, Chairman and Managing Director of IREDA. Up next is Mr. Amit Chatterjee, Chief R&D Officer, Vedanta Limited. Mr. Amit Chatterjee, Chief R&D Officer of Vedanta Limited. A round of applause, please. Up next is Mr. R.P. Singh, Chairman and Independent Director of Jyoti Structures Limited. Mr. R.P. Singh, Chairman and Independent Director of Jyoti Structures Limited. A round of applause, please. Next is Mr. P.P. Gupta, Managing Director of Techno Electric and Engineering Company. Mr. P.P. Gupta, Managing Director of Techno Electric and Engineering Company. Next, we have Mr. Devendra Thakur, CEO of Dhamra Port. Mr. Devendra Thakur, CEO of Dhamra Port. Next, we have Satya Gupta, President of VLSI Society of India. Mr. Satya Gupta, President of VLSI Society of India. अब हमारे समक्ष है आर.के. चतुर्वेदी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पीएफसी। हमारे समक्ष है आनंद जोशी जी,
Head Research, Bajaj Electricals. अब हमारे समक्ष है गिरजा शंकर जी, जनरल मैनेजर टेक, EESL। तालियों की अभिनंदन से अब हमारे समक्ष है सुदीप नाग जी, रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, NTPC। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन करिए। अब हमारे समक्ष है YK दीक्षित जी, RED पावर ग्रिड। अब हमारे समक्ष है सुब्रत मिश्रा जी, MD, डैनियली कोरस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन करिए। सांस्कृतिक राजधानी राज्य राजधानी कटक भुवनेश्वर। प्रथम आपको दृश्य देखा चाहिए। क्राइम, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, बिजनेस, जीवन जीविका और संघर्षर आखि देखा कहानी। ट्विन सिटी बड़ खबर प्रतिदिन संध्या 5:30 केवल अर्गस न्यूज रे। आमो परता खबर रे प्रथम आमे दौ साधारण जनता मौलिक समस्या को गुरुत्व, तर्क वितर्क विश्लेषण, निर्भीक सांबादिकता आम संकल्प। अर्गस न्यूज टीआरपी रो दौड़रे नुहे, सत्यर संधान रे लोकों साथी रे। अर्गस मेकअप, गेटअप, प्रेजेंटेशन, एक्शन, रिएक्शन, सेलिब्रेशन, रूपेली परतारू रंगमंच। केवल मनोरंजन ही आमर टार्गेट। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। E3 रविवार
सकाळ 9:30 और राति 9:30 रे। अरे चगली 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 जिया सेता भारी अभिमानी नी टिके मिछे से भारी फुले से गिरे नानी अरोवर इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक व उनकी टीम हितेश कुमार पासा जी। अरोवर इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक व उनकी टीम हितेश कुमार पासा जी। A round of applause, please. कार्बोनेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक अंकित कुमार जी। एवं होपुन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक व उनकी टीम रीपम बरुआ जी। A big round of applause, please. Thank you, everybody. Congratulations to all the startups. Please note, these are the startups incubated by the Research and Entrepreneurship Park of IIT Bhubaneswar. We are certain these associations will propel great changes in the arena of startups. We have now arrived at the most awaited moment of the day. Our chief guest, Shri Dharmendra Pradhan, Union Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship, will now address the gathering. I call upon Ipshita, a PhD scholar of our institute, to introduce our esteemed guest to the gathering. Ipshita. Thank you, ma'am. Jai Jagannath. IIT भुवनेश्वर ए मनोरम परिसर रे समस्त सम्माननीय सुधीवृंद को मोर सादर प्रणाम। मु स्वागत करने को चाहिए भारत केंद्र सरकार मंत्रिमंडल शिक्षा दक्षता विकास तथा औद्योगिकरण विभाग मुख्य उपदेष्टा श्री धर्मेंद्र प्रधान को। मान्यवर मंत्री श्री प्रधान ओडिशा माटीर जड़े सुयोग्य संतान
जी समग्र भारतवर्ष रे शिक्षा शक्ति दक्षता विकास और अनुसंधान को औद्योगिकरण सहित ओतप्रोत भाव में जोड़बार प्रमुख भूमिका निर्वाह करिसेंती। केंद्र कैबिनेट पाह୍ୟାର दायित्व सहित श्री प्रधान संसदर सक्रिय सदस्य भाव में मध्य प्रदेश को राज्यसभा प्रतिनिधित्व करुछंती। अनेक उद्दीपनार सहित मु कहबाकू चाहे आज समावेशर मुख्य उद्देश्य 100 क्यूब स्टार्टअप श्री प्रधानकर ही मानस संतान भौगोलिक तथा लिंगगत भेदभाव को अनेक उपरकू को जाई नूतन पीढ़ी को बजार रणनीति उद्देश्य प्रस्तुत कराइबा एक प्रयास। आगामी 2036 मसीह जेतेबेले ओडिशा स्वतंत्र प्रदेशर शतक जयंती पालन करुथिबो आईआईटी परिसर रे गोटी को 100 कोटी मूल्य हिसाब से 100टी स्टार्टअप सृष्टि करिवार यह एक अभूतपूर्व संजोग। समूह करताली मध्य मु स्वागत करुछि समूह करताली मध्य मु स्वागत करुछि मान्यवर केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय को अनुग्रह करी सभार शोभावर्धन करी आगामी भविष्य से आमर मार्गदर्शन करंतु। जय जगन्नाथ। नमस्कार। I welcome all the dignitaries on the dais, distinguished dignitaries from Finland, Kenya, Oman, USA, Australia, UK, UAE, head of the different universities, vice chancellor of the different universities, head of the different central research institutions, faculty friends from IIT, startup participant of the different part of country, my dear students from IIT Bhubaneswar. Today is a landmark day because today we put the foundation stone of a new Konark temple, the research and entrepreneurship park. I am confident in future you all are in a very historic place. During the introduction of the program, it was told half a century before of 1857, this place, when I am talking this place, dignitaries, this place means this place. We all are on the foothill of Barunai Pahad, Barunai Hill. On the fort of Barunai, the warrior of the then Kalinga or Utkal fought with Britishers for our motherland's pride and independence. They sacrificed their entire life. Bakshi Jagabandhu led the movement from this part of the state. In the western part of the state, Veera Surendra Sai, the similar time he fought for the motherland. So you all are in a historic place. You are very near to Konark. You are very near to Puri and Lingaraj temple. As my dear friend Ashish Chauhan was mentioning during his speech, they all are monument of innovation, monument of modern architect, the symbol of wealth and pride. That means yesterday I am thankful to my colleagues from AICT. They organized a fireside chat
to share few ideas with young startups and investors, those who came yesterday evening. I said yesterday night, in Odia society, innovation is in the DNA of Odia society. In the 21st century, I am thankful to all the speakers. I am thankful to all the speakers. I am thankful to those who have come here and signed an MOU with IIT Bhubaneswar. I am thankful to my dear friend Ranjit Ratha, being a Odia, is the chairman of Oil India Corporation. He gave 5 crore rupees support investment to few startups. That means my application is there with you, Mr. Narendran. My application is there with you, Mr. Vivek Lal. And my application is there with you, Mr. Das. And all the corporates, those who are here. We have to handle our youngsters. Bandhugan, gata kali mu kahithili 100 cubes ର ଅର୍ଥ 2036 ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଥିବ ସେ ସମୟରେ एक भारत श्रेष्ठ भारत. Today, for me, the entire from last evening to till now, I am thrilled, I am delighted, I am full of joy because I see the bright future. I see the new idea, I see the innovation, I see the dynamism among the youngsters. But for me personally, when we planned about this event few weeks ago, I have suggested Professor Karmalakarji, why don't you have a local IIT band? Let they sing a song, let they inspire with their own imagination. In a lighter mood I have suggested, but I am very much thankful to the band. I think that band is RO. From Harsraj to Soumyadeep. Bands are good, all music are good. But what they visualize for Utkal Pradesh. This is the Prime Minister's vision of Ek Bharat, Shrestha Bharat. You all are Odia now. यह आप सबकी जिम्मेदारी है. विश्व जब एक छोटी सी गांव बनते जा रहा है और विश्व की तमाम लोगों की भारत के ऊपर आस्था बढ़ रही है, 2 चीज हो रहा है. विश्व टेक्नोलॉजी के कारण एक गांव बनते जा रहे, छोटी सी स्थान बनते जा रहा है. उस समय में भारत की नौजवानों के ऊपर, क्योंकि विश्व की समस्या का समाधान सब ढूंढ रहे हैं. विश्व की समस्या यानी विश्व की मनुष्य की आवश्यकता की चीज, पर्यावरण हो या खाद्य पदार्थ हो, पानी हो या ईज ऑफ लिविंग हो, ये सारे में जब विश्व की कलेक्टिव विजडम अपने खोज में है, उस समय में मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं. I am not exaggerating my ideas and views. Entire world is looking towards India because India has a demographic dividend. भारत में नई पीढ़ी सबसे ज्यादा भारत में ही है और हमें कहने के लिए कोई द्विधा नहीं है. जब इसीलिए मैंने उनको कोणार्क कहा. हजारों साल पहले हमारी समाज की सामूहिक पुरुषार्थ का प्रतिफलन कोणार्क था. निसंदेह भारत की नेतृत्व में 21st सेंचुरी में हमारी IITians, हमारी NITs,
हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज SITI एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज विश्व की समस्या का समाधान निकालेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। 100 क्यूब उसकी छोटी सी अंश है। 100 साल जब ओडिशा को पूरा हो रहा होगा, ओडिशा रे 100 जन उद्यमी ओडिशारू, तार अर्थ नुहे केवल ओडिया पिला, तार अर्थ ओडिशारू, ओडिशार भूमिरू आइडियाज को डेभलप करके ओडिया पिला निश्चित तार नेतृत्व नेबे। गत काली अनेक बंधु को मु काली भेटिली, मो पाई उत्साह यही पाई 100 गुण है मोर मन भितरे। मु काली जो भलिया पिला मानकु पूरी अंचलर नड़िया खोलपार को कंपोजिट मटेरियल बने के फसिल फ्यूएल रो विकल्प मटेरियल यानी पेट्रोकेमिकल रो विकल्प मटेरियल बाहर करिवार ओडिया झियो ही तार नेतृत्व नउची। एईटा ही बड़ प्रेरणा। सस्टेनेबिलिटी रो नुआ नुआ आइडिया, सस्टेनेबिलिटी रो नुआ नुआ आइडिया आज आम राज्यर पिला माने भी वैश्विक आवश्यकता को ध्यान रखी करि पारछन। ऐसे कैसे नहीं होगा? इसलिए होगा पिछले 10 साल से जिस प्रकार की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, मैं अगर 2 ही स्टैटिस्टिक्स, इफ आई साइट 2 एग्जांपल्स, if I compare 2014 to 2024, there is a 32% increase in girl student enrollment. This is the achievement of last 10 years. Beyond that, STEM education is the priority education in the entire world today. 43% students, girl students are there in the STEM education. That means out of 100, 43 are girl students in our country. This is the highest number of girls participation in the entire world. This is our country. This is women-led development. लेकिन बैंड में एक ही लड़की था। ये बढ़नी चाहिए। और आज तो हम लोग इसमें निस्संदेह भारत में महिलाओं की नेतृत्व में विकसित भारत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी नींव आज भी रखी गई। मित्रों, कोई भी समाज की मूल अधिवासी अगर अपने चाह की बारे में, अपने डिजायर के बारे में, अपने एस्पिरेशन के बारे में अगर क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो उसको एक आगे देखने वाला समाज नहीं कहा जा सकता है, उसको एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं कहा जा सकता है। मैं इसीलिए फिर आश्वस्त हूं, हम तो सूत्रधर है, हम तो यहां जैसे कहा गया एक स्टार्टअप की इकोसिस्टम, और प्रधानमंत्री जी आपने बयान में कहा भारत की समस्या का समाधान भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम में है। अभी मेरे मित्र चिंतन वैष्णव जी एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रख रहे थे, वहां भी उड़ीसा में लड़कियों की पार्टिसिपेशन ज्यादा है। 40% उड़ीसा की स्टार्टअप में लड़कियों की है। अभी भी हमने स्टेज में देखा जिनके साथ एमओयू हुई, उनमें से भी जिस पृष्ठभूमि की महिलाएं थे, ये भारत की एक नई दिशा को दर्शाती है। स्टार्टअप आज देश में 1,20,000 तक पहुंच गए हैं। ये भले ही आज 15,000 16,000 में एक हो, आने वाले दिनों में ये 1500,000 के अंदर एक होने वाला है, क्योंकि 10-15 लाख स्टार्टअप ऐसे ही दिखते दिखते बनेगा और उड़ीसा भी उसमें से आगे बढ़ जाएगी। और मैं करुणाकर जी, मैं आपको एक ही निवेदन करूंगा, आज उड़ीसा में देयर इज नो डेarth ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ बैंकिंग लोन, in form of angel investment, in form of venture capital. I appeal to all my Udiya brothers. मेरे उड़ीसा के जितने सारे मित्र, मोर ओडिशार भाई माने जोठी जी अछंती, they should extend their cooperation. They should play their big brother's role to handle the startup ecosystem of Odisha.
It may be 100 cube of IIT Bhubaneswar. किंबा ओडिशा रे मोर सूचना अनुसार भुवनेश्वर ही केवल 15 रु अधिका गुणात्मक इनक्यूबेशन सेंटर अच्छे विभिन्न भारत सरकार संस्था गुड़िक विभिन्न यूनिवर्सिटी गुड़िक विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट रे ओडिशा रे एनआईटी पाखरे आईआईटी पाखरे नाइजर अच्छी ओडिशा रे आइजर अच्छी एम्स अच्छी बायोटेक्नोलोजी रो अग्रणी इंस्टीट्यूशन अच्छी आईसीएमआर भलिया गोटे मौलिक फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छी एटी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स अच्छी एटी आईआईएमटी अच्छी एटी कृषि उद्भावन रो कृषि आविष्कार रो अनेक इंस्टीट्यूशन एटी अच्छी वी हैव टू क्रिएट ए इकोसिस्टम वी हैव टू इंटरलिंक विथ ईच अदर. And I appeal, Mr. Karnakar ji, IIT should took lead of all these initiatives. हमें कोई बाउंड्री खड़ा नहीं करनी है. हमारे IIT वाला सबसे अच्छा है, बाकी तो ऐसा नहीं सोचना है. सबने अच्छा किया है, सब मिलकर कैसे और अच्छा करेंगे, तभी तो विकसित भारत होंगे, तभी तो 100 क्यू होगा, तब तो 2036 तक उड़ीसा में भी 100 नेटवर्थ 100 करोड़ की नेटवर्थ वाला हमारी उद्यमी निकलेंगे. मित्रों, क्लैरिटी इसी में चाहिए. जब समाज में वेल्थ क्रिएट होती है, वेलफेयर रहना तय होता है. और आज तो दुनिया तेजी से बदल रहा है. यहां बैठ के आने वाले 25 साल दुनिया क्या होगा, इसीलिए इंडस्ट्री यहां उपस्थित है. स्टील में, डिफेंस में, एनर्जी में आने वाले दिनों में क्या होगा, इंडस्ट्री को पता है. स्टूडेंट्स के मन में अमाप कल्पना है और अच्छे प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है. लेकिन इसको जैसे हमारी अग्रवाल बता रहे थे, जो खुद एक स्टार्टअप चलाते, चैलेंज का है. वेयर लाइज द चैलेंज? ईज ऑफ प्रोसेस, ईज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, ईज ऑफ एक्सेसिंग मार्केट, ईज ऑफ एक्सेसिंग फंड. अभी किसी ने मेरे को कहा हमारी देश की व्यवस्था, कोई एक नया आइडिया लेके संजय कुमार जी और संजय मूर्ति जी के पास जाओ, ये दोनों अलग है. इसलिए मेरे दोनों मित्र है, दोनों शिक्षा विभाग के सचिव है, इसलिए उनकी मेरे मित्रता का लिबर्टी उनके पास में लेता हूं. व्यवस्था की स्वभाव है, ये नहीं हो सकता कह देना. शिक्षकों की, फैकल्टी की दायित्व है ये कैसे हो सकता है, व्यवस्था को कन्विंस करना. तब जाके हमारे बच्चों की एनकरेजमेंट होगी और हौसला बढ़ेगी. जब इसकी रचना की जा रही थी, मैंने कहा था कि देखो, मेरा जो पिछले 2-2.5 साल का अनुभव हो रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, 2-3 चीज की गैप दिख रहा है. और आज जब मैंने सुबह नरेंद्र जी से आने के बाद बात कर रहा था, उन्होंने एक अपना जिस फील्ड की जो होगा उसी फील्ड की टर्मिनोलॉजी में वो उनको चीज़ों को समझाएगा. उन्होंने मेरे को एक इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी रेडीनेस के बारे में उन्होंने एक इंडेक्स से मेरे को समझाया. बोले कि इंडस्ट्री किस प्रोडक्ट को पिकअप करेगा जिसमें अप टू लेवल 6+ आ जाएगी परफेक्टनेस की, उसको इंडस्ट्री उस आइडिया को पिकअप कर लेगा. हमारी देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी कहां तक है? हमारी देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी लेवल 2.5, 3, 4 तक ले जाना. 5-6 कहां से आएगा, यही चैलेंज है. 5-6 आएगा स्टार्टअप इकोसिस्टम से. स्टार्टअप एक रिस्क है. अगर मैं 100 क्यूब कह रहा हूं तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा 10,000 लोगों के ऊपर. 10,000 कहां से आएंगे? 10,000 आएंगे स्कूल से. मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, आप एक बार इस एग्जीबिशन को देख के जाइएगा. उस एग्जीबिशन में मैं, मेरे मित्र विवेक लाल जी अमेरिका में एक बड़े कंपनी में, डिफेंस कंपनी की सीईओ है, उनको मैं 2-3 चीज छोटा छोटा समझा रहा था. बरगढ़ का ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़का, बरगढ़ इज ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट टाउन इन आवर स्टेट. He was very confident to explain a science project.
My attraction to that boy is not what product he is showing. My attraction about that boy is about his confidence, about his clarity of science, about his thought process. इसलिए ये पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी NEP 2020 इंप्लीमेंट किया जा रहा है. We are coming out with new textbooks. My friend Sanjay Kumar ji is taking lead on all these front. How to create new generation textbooks, new generation aspiration from class, school days. From that point to marketplace, we have to recreate a new model that we are exactly doing in NEP 2020. This research and innovation park, innovation and entrepreneurship park is part of that. आज यहाँ इंडस्ट्री के लोग आए हैं, इन्वेस्टर भी आए हैं, और मैंने कहा था एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है फैकल्टी. मैंने कहा था मेरे ओर से अनुरोध करना IIT की सभी फैकल्टी इधर आए, इस प्रोग्राम में. मेरे विश्वास है सारे फैकल्टी यहाँ उपस्थित हैं. मैं आपको आज एक ऑफर देके जा रहा हूँ, पॉलिसी में तो है, आप सब मिलियनर बन सकते हो, सच में बन सकते हो. मैं कोई आपको मजाक करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन पार्टनर बनाना पड़ेगा ऊपर वालों को. दोनों मिलके, अभी तो पॉलिसी ऐसे ही है, फैकल्टी कैन ऑल्सो बी ए इक्विटी होल्डर इन ए कंपनी. दोनों अगर गुरु, पुराने समय तो गुरु सैक्रिफाइस ही करता था, शिष्य बढ़ जाता था. अभी लेकिन नया बदल गया, गुरु शिष्य दोनों को ही पार्टनर बनाना पड़ेगा. अभी पॉलिसी में हमने दोनों को पार्टनर बनाया. फैकल्टी परमानेंट है. मैं जो फैकल्टी कहता हूं, नॉट ओनली IITians, IIT फैकल्टीज, भुवनेश्वर में कम से कम 1000 इंपोर्टेंट फैकल्टी है. टैलेंट पूल है सारे फील्ड के, सारे भुवनेश्वर में. मैं इस शहर में पढ़ा हूं, बढ़ा हूं, मैं जानता हूं पर्सनली कई लोगों को. 1000 टैलेंट पूल है जिनकी सोच विश्व को प्रभावित करता है. लेकिन इसकी इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी. ये काम IIT भुवनेश्वर की फैकल्टीज की है. आप दरवाजा को खोलना पड़ेगा. आप बाकी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी को चाय पिलाना पड़ेगा. आप उनके पास जाके चाय पीना पड़ेगा. दोनों की जब दोस्ती होगी तब हमारी बच्चे, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये कॉमन हॉस्टल बनाते हैं. इन दिनों में एम्स और IIT भुवनेश्वर की एक MOU हुई है कुछ डुअल डिग्री के लिए. उन्होंने कहा हॉस्टल बनाते दोनों के लिए, किसी भी कैंपस में, इधर या उधर. दोनों बच्चे जब हॉस्टल से आएंगे, क्लासरूम से आके हॉस्टल में रहेंगे, तब तो रात 3 बजे तक. IITians कितने बजे रात को सोते हैं आप लोग? सच बताना. 2 बजे, 2 या 3, 4. अब उठते कब हो? चलो जितना बजे उठो तो आपके ऊपर है, लेकिन आइडिया तो आएगा रात को 2 बजे. मैं इतना जानता हूं, आइडिया आएगा रात को 2 बजे. जगना तो पड़ेगा तब तक. लेकिन अगर मल्टी ऐसे मैं कभी, कल मेरे को RP सिंह ने बताया कि साहब रात को आते तो रौनक और कुछ होता. मैं जानता हूं कैंपस में रात पूरा रौनक भरा ही होता है. मेरे बातों का गलत अर्थ नहीं निकालना. मैं आइडियाज की रौनक कहता हूं, न्यू इनोवेशन की रौनक कहता हूं. और यहां एटमॉस्फेयर ऐसे होनी चाहिए. उड़ीसा की सारे टैलेंट पूल की इच्छा होनी चाहिए. लेट मी सी द रिसर्च एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पार्क ऑफ IIT भुवनेश्वर. यहां मैं सारे इंडस्ट्री के लोगों को, नरेंद्रन जी, कम से कम आपका तो भाई, आप तो हमारे बड़े पार्टनर हो टाटा वाले उड़ीसा में. आप तो कम से कम, मैं अनुरोध करूंगा, आप कुछ भी करो, आप यहाँ कम से कम 2 महीने में एक बार आके 15-20 मिनट यहाँ घूम के तो जाओ. हमारे यहाँ हेलीपैड भी है. मैं सबको अनुरोध करता हूं, इंडस्ट्री को यहां आना चाहिए, प्रॉब्लम लेके आना चाहिए. हमारे बच्चों में भरोसा करना चाहिए, हमारी फैकल्टी पे भरोसा करना चाहिए. Odisha agricultural based state है. Just I was talking to one of our colleague who has come with our invitation from embassy of Kenya. We are talking how we can do work together. She said in the area of agriculture,
वी कैन वर्क टुगेदर। मित्रों, मेरे बात पे भरोसा रखो, आपकी स्टार्टअप की मार्केट प्लेस भारत नहीं ग्लोबल होने वाला है, इमर्जिंग इकोनॉमी होने वाले हैं, ग्लोबल साउथ होने वाला है। इसलिए मार्केट की कोई चिंता नहीं है, चैलेंज है मेंटरिंग में। इसलिए मैं अंत में उड़ीसा संबंधित, मैं उड़िया नहीं कह रहा हूं, उड़ीसा संबंधित जो लोग हैं सभी मित्रों को मैं अनुरोध करता हूं, सब उड़ीसा की इस 100 क्यूब की इनिशिएटिव पे अपना अपना पार्टिसिपेशन करने के अपना प्लान बनाएं। 2036 फिक्स है, चिंतन ने सही कहा, 2036 इज फिक्स, वो तो 12 साल में आ ही जाएगा। 100 लोग बन जाएंगे, ये मेरा भरोसा है। और जितना नहीं था, कल रात की AICT की फायर सेट चार्ज से अभी तक मैं कन्विंस हूं, और एग्जीबिशन देख के पूरा कन्विंस हूं, आ ही जाएगा। लेकिन ये डीप टेक में आएंगे क्या यहाँ की फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन करके कुछ सस्टेनेबिलिटी के नए प्रोडक्ट बनाएंगे क्या? हेल्थ केयर की कुछ नया चीज लाएंगे क्या? इस प्रकार की जन आवश्यकता की क्या चीज ले आ पाएंगे? इसीलिए मैं ऐतिहासिक स्थान पे हो, एक ऐतिहासिक क्षण पे हो, जब दुनिया भारत को देख रहा है, और मेरा पूरा भरोसा है ये 100 क्यूब की एक छोटी सी बेबी स्टेप से उड़ीसा का विकास तो होगा ही, लेकिन देश की भी विकास होगा। इसी शुभेच्छा के साथ आज सभी पार्टिसिपेंट, सभी स्टेक होल्डर हमारी निमंत्रण पे, यानी IIT भुवनेश्वर की निमंत्रण पे आप सब इकट्ठा आए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much for your encouragement and support. We have now arrived at the last item on the agenda. It is time to propose the vote of thanks. May I request Dr. Shubhankar Pati, Associate Professor at the School of Minerals, Metallurgical and Materials Engineering and CEO of the Research Park, IIT Bhubaneswar, to kindly come forward. भारी फुले से गिर रही नानी एगारो 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 मोड़ मणि अम गोरी नानी अम गोरी नानी अम गोरी नानी अम गोरी नानी चलो देवमणि चलो राज्य आमर, भोट आमर, सरकार आमर, आम विकास भी हेबो आम कथारे। चोरी चपाटी पिसिर आमे करिबु